Hi everyone. Am I audible? Good evening, Sachin. Hi. Uh, am I audible? Can you please tell me? Okay, great. And I'm visible also, I'm assuming. Okay, perfect. So, hello everyone. I am Purvi Nanda Vijay, and I am from Udaipur, Rajasthan. I am currently in the Indian Revenue Service Income Tax. Or so I tried to summarize 1 year preparation into this brief session. So I've also prepared some notes. I hope it works for you. So plan ये है कि in 15-20 minutes मैं आपको अपनी strategy share करूँगी so that ज़्यादा time हो for me to take your doubts and your questions, and I'll try to answer as many questions as possible. So so 15-20 minutes मैं अपना बताती हूँ, उसके बाद आप आराम से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो. और अभी इन बिटवीन मत पूछना क्योंकि आई माइट स्किप इट. अभी लेट मी जस्ट टेल यू अ ब्रीफ स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलोड. बिफोर दैट मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. आई एम पूर्वी नंदा. आई एम फ्रॉम उदयपुर, राजस्थान. और 2019 में आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पंजाब. मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वाज BA-LLB ऑनर्स एंड आई हैव स्पेशलाइज्ड इन क्रिमिनल लॉ. 2019 में कॉलेज के साथ ही मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था एंड नेचुरली प्रेपरेशन नहीं थी. ग्रेजुएशन के आई थिंक 10 दिन, हाँ, 2 जून 2019 वॉज माई प्रेलिम्स. तो बस एक एग्जाम की फील लेने के लिए आई गेव माई फर्स्ट अटैम्प्ट. और उसके बाद आई स्टार्टेड अ प्रॉपर प्रेपरेशन. सो माई प्रेपरेशन वॉज जस्ट प्रेपरेशन. मतलब ना मैं जॉब कर रही थी ना मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी. 1 साल मैंने सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है, नथिंग मोर नथिंग लेस. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरा 1 साल का टारगेट था कि 2020 का जो एग्ज़ाम है, 2020 एग्ज़ाम, वो मुझे देना है. और उसी में आई वांटेड टू क्लियर. ऑब्वियसली उससे ज़्यादा का प्लान था नहीं मेरा. और नाउ डिसीजन वॉज कि मैं दिल्ली से प्रिपेयर करूँ या मैं खुद से प्रिपेयर करूँ. और मुझे ऐसा लगता है जो सब्जेक्ट्स थे वो मुझे कोई पढ़ा नहीं सकता, वो मुझे खुद से पढ़ने थे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी. सो आई डिसाइडेड कि मैं खुद से घर पे रह के उदयपुर से पढ़ाई करूँगी. और दिल्ली में पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कोचिंग एनवायरनमेंट है वो मेरे लिए नहीं बना है. इतनी भीड़ में मैं ना रह सकती हूँ ना पढ़ सकती हूँ. और घर पे एक पॉजिटिविटी होती है जब आप घर वालों के साथ रहते हो. सो Shalu is saying if I can teach in English. I'll try to mix both Hindi English so that maximum audience is covered. Yeah. All right. So I started preparing in June 2019 from Udaipur only at my home because I wanted the positive vibes. I wanted the comfort of home. I did not want कि कोई भी टेंशन हो कि खाना कहाँ से आ रहा है, कपड़े कैसे धुल रहे हैं, रेंट कब देना है या कुछ भी. दिल्ली का एनवायरनमेंट मेरे लिए सही नहीं था. सो एट होम प्रेपरेशन वॉज माई फर्स्ट चॉइस. उसके बाद सो जब आप कोचिंग नहीं करते हो तो आपको खुद से पढ़ाई करनी होती है. एंड व्हेन यू स्टडी ऑन योर ओन तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. और आपको खुद अपना टाइम टेबल बनाना पड़ता है. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ. यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल टू योर सेल्फ. कोई आगे आपको ये नहीं बोलेगा पढ़ाई करो, टेस्ट दो. सो the discipline, the motivation has to come from within, especially when you are studying on your own and you have not joined any coaching. So yeah, no coaching, at home preparation. अब बारी आई कि पढ़ना कहाँ से है. So I started collecting material. I started reading blogs of different toppers. Anudeep Durishetty, Soumya Sharma, Vikram Garewal, Megha Arora. So based on these different toppers की book list, I made a book list. और सो मुझे ना फोमो होता था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि
मतलब ये भी नहीं, अगर ये नया मटेरियल आया है, इसमें से क्वेश्चन आ गया, तो वो बुक है, वो पढ़ना है एंड एवरीथिंग. सो आई हैड अ लॉट ऑफ फोमो. सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया था. अब क्योंकि मैंने मटेरियल इकट्ठा कर लिया था तो डिफिकल्ट ये हो गया कि पढ़ूं क्या, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. एनीवे, दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक. माय सेकंड मिस्टेक वाज, क्योंकि मैं कॉलेज से, आई वाज रीसेंट ग्रेजुएट, तो कॉलेज में यूजुअली ऐसा नहीं होता आप थ्रू आउट कॉलेज पढ़ते रहते हो, है ना. मेन पढ़ाई एग्जाम से पहले होती है. सो आई वॉज यूज टू दैट एटीट्यूड कि जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में मतलब हो जाना चाहिए. सो आई यूज टू लुक फॉर शॉर्टकट्स. जैसे जो सेकेंड ARC रिपोर्ट्स हैं, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर रिपोर्ट आई यूज टू ट्राई कि कहीं से समरी मिल जाए. जैसे GC लियोंग है, तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर बुक आई वाज ट्राइंग कि किसी के नोट्स मिल जाए मुझे ऑनलाइन, मुझे खुद से पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़े. सो दैट वाज माय सेकंड मिस्टेक, गोइंग फॉर शॉर्टकट्स. थर्ड मिस्टेक वाज कि अब मुझे था कि अब क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, ना मैं जॉब कर रही हूँ, ना मुझे कॉलेज का टेंशन लेना है, तो मैं पूरा दिन पढ़ाई करूँगी. सो आई ट्राइड मेकिंग अ टाइम टेबल ऑफ 14 to 15 आवर्स का पढ़ाई. सो इमेजिन, 1 साल 12 महीने, हर हफ्ते हर दिन 15 घंटे की पढ़ाई का मेरा टारगेट था. नेचुरली फॉलो नहीं हुआ. 3-4 महीने में यही करती रही और मैं हमेशा थकी भी रहती थी. आई वॉज ऑलवेज टायर्ड, आई वॉज ऑलवेज एग्जॉस्टेड, आई वॉज ऑलवेज कन्फ्यूज, और मोटिवेशन खत्म होता जा रहा था विद एवरी पासिंग डे. राइट. सो 3 मिस्टेक्स, बहुत सारा मटीरियल, बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट्स एंड टेकिंग शॉर्टकट्स. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस मेरे 3-4 महीने काफ़ी वेस्ट हो गए. फाइनली आफ्टर 3-4 months in October I realized कि गड़बड़ हो रही है, I can't do it this way. So in November 2019 I started a full-fledged preparation. I realized all these mistakes और ये mistakes को मैंने accept किया कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा. And then I made a list कि I'll have to address these mistakes. I need a proper plan. क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि UPSC की तैयारी इट्स नॉट अ स्प्रिंट. ऐसा नहीं है 100 मीटर भाग के रेस जीतनी है. इट्स अ मैराथन. आपको रोज भागना है सेम स्पीड पे 1 साल एटलीस्ट. राइट. सो अब उसके लिए टारगेट्स रीजनेबल होने चाहिए थे. बेस्ड ऑन दीज आई मेड अ फ्यू पॉइंट्स विच आई विल शेयर विद यू. या सबसे पहले बुक लिस्ट. सो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बुक लिस्ट लगी अनुदीप दुरीशेट्टी सर की. वो उसको मैंने इम्प्रोवाइज किया एज पर माई कंफर्ट लेवल. सो आई डिसाइडेड कि मैं 10 बुक 100 बार पढ़ूंगी. ये नहीं करूंगी कि मैं 100 बुक्स इकट्ठी कर लूँ और एक बार ही पढ़ पाऊँ. सो लेस मटीरियल, मल्टीपल रिविजन्स, जो मैं हमेशा अपने हर मैंने अपनी स्पीच में, हर इंटरव्यू में मैंने यही एम्फेसाइज किया है कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, 10 बुक को एक बार मत पढ़ो. सो ये मैंने अपनी गलती करके सीखा. सो मैंने एक फाइनल बुक लिस्ट बनाई जो आप लोगों को मेरे इंस्टा पेज पे भी मिल जाएगी. यू कैन फाइंड माई बुक लिस्ट ऑन द इंस्टाग्राम हैंडल विद माई नेम IRS पूर्वी नंदा विजय. Secondly, my optional was law. So for law optional, unfortunately, ज़्यादा material is not there. Test series is also not there. So it was difficult for me to make a book list. So I stuck with the book list of Soumya Sharma and Vaishali Singh. They both are from NLU, Delhi. और उनकी book list से I made the book list for law optional. Law optional के लिए we can, if you are interested, we can conduct a different session altogether for law optional. Right now I am limiting myself to general strategy. So first thing first, proper book list, limited material. Secondly, test series. अब हाँ ठीक है, दिल्ली से हम कोचिंग नहीं ले रहे हैं, पर प्रैक्टिस तो करनी है, राइट. सो फॉर प्रैक्टिस आई फिक्सेटेड ऑन one institute, Vision IS. I joined prelims test series and mains test series. Right, and along with that I also kept reading the previous year questions to understand the pattern. Third was making a timetable. Right, so from 15 hours I shifted to 9 to 10 hours. Ki maximum I'll study only for 9 to 10 hours. 8 hours I have to sleep. No compromise on sleeping. एंड बाकी 6-7 आवर्स जितना भी है उसमें अदर स्टफ लाइक फैमिली टाइम,
exercise, khana pina and all. Just very, very simple. 9 to 10 hours, not more than that. Right? So 1 year plan ab banana hai. So you might ask me and you might be wondering, is it possible to clear this exam in 1 year? So I feel कि 1 year is more than enough. 1 साल से ज़्यादा नहीं चाहिए if you are consistent, if you are dedicated. And obviously it's my opinion. ये आप लोग you might differ with me, but in my opinion, yes, 1 year is enough. So अब 1 year plan में many people say कि prelims का अलग पढ़ो, mains का अलग पढ़ो. That I did not do. I went for integrated approach, prelims and mains together. अब क्या होता है कि द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जाम, सो वन ऑफ माई फैकल्टी इन माई ट्रेनिंग, IRS की ट्रेनिंग में, ही सेड दैट UPSC इज द एग्जाम ऑफ मैनेजमेंट. इट टीचेस यू हाउ टू मैनेज. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इज टाइम मैनेजमेंट, राइट? सो टाइम मैनेज करने के लिए यू नीड टू मॉनिटर कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है. सो फॉर दैट I try to figure out कि मुझे एक पेज पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है. सो यूजुअली एक नॉर्मल A4 साइज पेज पढ़ने में, सिर्फ रीडिंग, इट टुक मी 5 minutes. मतलब 1 hour में आई कैन स्टडी 12 pages. सो ऐसे करके आई एस्टिमेटेड कि जो मेरी बुक लिस्ट है वो पढ़ने में हाउ मच टाइम आई विल बी नीडिंग, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट आई कैलकुलेटेड टाइम. अब मेरे पास 1 year का टारगेट है और मेरे को है कि कितने सब्जेक्ट्स में मुझे कितना टाइम लगेगा. So, based on that, I set daily, weekly and monthly targets. My daily timetable is available on my Insta page. You can always refer to it. It's there on the highlights also. It's there as a post also. So, like I said, 9 to 10 hours study, that's all. Some of you might be thinking 9 to 10 hours बहुत होता है, but since I was not working and I did not have any other thing to do, so yeah, 9 to 10 hours I used to study. Okay. सो अब मेरे पास वैसे 7 months बचे थे, क्योंकि 4-5 महीने तो मैंने खुद की मिस्टेक्स में आई वेस्टेड. बट थैंकफुली कोविड की वजह से जो मई 2020 में द एग्जाम वाज सपोज टू हैपन, दैट एग्जाम हैपेंड इन October 2020. सो आई गॉट सम एक्स्ट्रा टाइम. सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, दिस इज माई स्ट्रैटेजी विच आई फील कि 1 year में इट शुड बी डन. So whatever I told you right now, the book list, the daily timetable, everything is available on my Insta page. You can go and follow me on that. The Insta handle is irs.purvi.nanda.vijay. It's difficult right now. You'll find my tag in UPSC Guides posts. Anyway, so coming back to 12-month strategy, 1 year strategy, I feel 10 months integrated approach, mains and prelims, and 2 months dedicated approach to prelims. That's all. So 10 months में I'll tell you what was my strategy. So GS1 में there are about 4 main subjects: history, art and culture, geography and society. Based on my calculation, it took me 1.5 months to finish those subjects. उसके बाद I revised it again and I wrote one test series, one mock test of GS1. So in 2 months, I finished GS1 with one test series. Secondly, GS2 again 2 months, पढ़ाई, revision and test series. Similarly for GS3, 2 months, 2 months, 2 months, 3 GS over. 6 months में 3 GS over with one test each. GS4 I found comparatively easy. It only took me 15 days. And then an optional, which was law, it took me 1.5 months. So in 8 months, I finished all the subjects along with optional एक बार करके. अब I have 2 more months before I start dedicated prelims approach. So 8 months, one time finish, 2 months. So 15, 15, 15. 4 slots of 15 days each. उसमें again I did the same, revision, test, revision, test, revision, test. एंड फाइनली जो 2 महीने बचे थे उसमें आई डिड फुल फ्लेजेड प्रेलिम्स प्रेपरेशन. और वॉट वॉज दैट? अगेन इट वॉज रिविजन ओनली, देयर वॉज नथिंग एक्स्ट्रा. क्योंकि मेन्स, इफ यू सी द सिलेबस, मेन्स का सिलेबस इज मोर देन प्रेलिम्स का सिलेबस. बट अब वी हैव कंप्लीटेड मेन्स का सिलेबस ऑलरेडी विद 2 रिविजन्स. सो प्रेलिम्स इज ऑल अबाउट रिवाइजिंग दोज थिंग्स along with practice.
For practice, again, I referred to Vision IS test series. I wrote around 30 mock tests and past 5 years ke previous year questions. So yeah, this was my entire 12 months approach. Don't worry, even if you have not heard it, this video will be available on UPSC Guide ka Instagram handle. Along with that, I'll make a written post and I'll post it on my handle also, this 1 year strategy. अगर आपको समझ नहीं आया है तो you can again ask me in doubts. Alright. Stylish Altaf, I'm really sorry I can't keep it entirely in English. Because the members in audience, I think they are comfortable with both the languages. So I'll try to do in both Hindi and English. Anyway, so yeah, this was one year strategy. Now, see, ये strategy आपको कोई भी बताएगा because honestly, I did not do anything extra. What I feel I did unique in my opinion was I tried to make this 1 year as happy as possible. And it's very important. If you're not happy from within, it's very difficult to sustain your preparation for 1 year. It's trust me, if you're doing it forcefully, you won't be able to do it for 1 year. मतलब honestly, जब तक मेरे अंदर से I wasn't happy, every other day I wanted to quit. स्टार्टिंग में रोज लगता था कि यार छोड़ दो, क्यों प्रिपेयर कर रहे हो, LLM कर लो, ज्वाइन अ लॉ फर्म, अच्छा भला लॉ करा है, क्यों कर रहे हो. सो इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो प्रीलिम्स में अगेन देयर आर 2 पेपर्स. वन इज जनरल स्टडीज, वन इज CSAT. जनरल स्टडीज लाइक आई सेड कि वो मेंस में कवर हो जाएगा. CSAT में I did not do separate preparation because my law was my graduation subject और उसका जो entrance exam होता है उसका syllabus is similar to CSAT. तो उसके अंदर जो भी मैंने पढ़ा था वही I read and I prepared CSAT doing previous year question papers. So I did not refer to any test series. I only did previous year question papers of CSAT 5 years के, क्योंकि आई फेल्ट कि इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है. अगेन कुछ लोगों को सम पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट CSAT, बट क्योंकि आई हैड एन एडेड एडवांटेज, आई हैड स्टडीड इट बिफोर, सो आई डिड नॉट डू अ सेपरेट preparation for CSAT as such. I only did 5 years previous year question papers. So yeah, now coming back to how to make this journey happy, right? So सबसे पहले ना it's very important to feel that you are in control of the situation, because honestly speaking UPSC is difficult because बहुत uncertainty is involved, right? It's very uncertain and it's आपको पता नहीं है कि क्या होगा, because luck factor and all many things are at play. मतलब आप सिर्फ इनपुट डालते हो बट मेनी थिंग्स आर वर्किंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम कंट्रोल. और वो कंट्रोल आता है पढ़ाई करके. मतलब और पढ़ाई मतलब ऑब्वियसली इट्स नथिंग न्यू, बट आई फील कि करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हो रोज विदाउट स्किपिंग, ठीक है, तो एक सेंस ऑफ कंट्रोल आता है. जैसे अब मेरे लिए अगेन आई सेड रीजनेबल टारगेट्स, तो मैंने हिंदू नहीं पढ़ा है. आई रेड इंडियन एक्सप्रेस एंड एंड में इंटरव्यू टाइम पे आई रेड टाइम्स ऑफ इंडिया. और साथ ही इनसाइट्स IS का जो करंट अफेयर्स डेली अपडेट्स होते थे दैट आई यूज टू स्टडी. सो डेली करंट अफेयर्स पढ़ने से आई फेल्ट कि आई हैव कंट्रोल ओवर द प्रेपरेशन. बाकी चीज़ें इफ आई यूज टू स्किप, स्टिल आई फेल्ट कि नो आई एम रीडिंग करंट अफेयर्स, सो आई एम इन कंट्रोल, राइट? सो नंबर 1. Secondly, I tried to exercise regularly because when you exercise, your body releases happy hormones, right? So, अब exercise वो नहीं कि जिमिंग करनी है. For me, exercise was 30 minutes, या तो walk कर लिया, badminton or yoga, very simple, but 30 minutes I need to move my body, right? Third thing is meditation. अभी काफ़ी ट्रेंडिंग हो गया है, एवरी अदर पर्सन इज डूइंग मेडिटेशन, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ द हाइप. मेडिटेशन इज वेरी वेरी पावरफुल. कुछ नहीं, यू जस्ट नीड टू सिट डाउन, रिलैक्स एंड जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स. दैट इज मेडिटेशन. आपको ना अपने थॉट्स रोकने हैं, ना अपनी सांसें गिननी है,
बैठो और खुद को ऑब्जर्व करो, हार्डली 10 minutes, दैट्स ऑल. मेडिटेशन का पर्पस है टू गिव योर माइंड some break, some peace. That's the purpose of meditation, nothing more than that, right? And finally, because मैं घर पे थी तो family time played a very crucial role. तो मैं हमेशा यूज टू मेक श्योर कि मैं दिन में आधा 1 घंटा 30 minutes 1 hour I used to spend with my family. We used to talk or have dinner together or play ludo, or we also used to play cards, पत्ते खेलते थे हम. So it was a lot of fun. So yeah, family time also made my preparation happy. So you need to find out ki what makes you happy. Based on that, add it to your timetable, add it to your routine, because you need to be happy. If you're not happy, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, right? So yeah. अच्छा, now one key factor मेरी preparation में जो एक USP होता है ना, unique selling point, which I feel played a major role in my selection was I was not using my phone. November 2019 में I gave up my phone. मैंने सिम निकाली, सिम मैंने अलमारी में रख दी, मम्मी को दे दी, फ़ोन अलग, हैंडसेट मैंने अलग मम्मी को दे दिया. मतलब आई वॉज श्योर मुझे फ़ोन हाथ ही नहीं लगाना है. मैंने कसम खा ली थी कि फ़ोन नहीं चाहिए, क्योंकि फ़ोन वॉज माई बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन. सोशल मीडिया बंद भी कर दो तो भी फ़ोन में यू स्टिल हैव दी एक्सेस कि यार देख लो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. सो मतलब फ़ोन आई थिंक वॉज माई बिगेस्ट ऑब्स्टैकल इन द प्रेपरेशन. सो नवंबर 2019 मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया, सिम और फ़ोन दोनों अलग कर दिए. एंड जनवरी 2021 आफ्टर राइटिंग माई मेन्स मैंने अपना फ़ोन ऑन किया था. सो फॉर 14 months आई वॉज नॉट यूजिंग माई फ़ोन. Yeah, so I think that was the USP of my entire preparation. So, to conclude, I feel कि civil services examination में जो C है, right, that stands for 3 things: consistency, current affairs, and common sense. अगर ये 3 चीज़ें आपकी पकड़ में हैं, so it's very easy to make the entire journey very smooth, right? I'll repeat: consistency, current affairs, and common sense. That's all. Nothing more than that is required. Yeah. So again, this entire preparation strategy, I'll repeat कि I was not working and I was not in college. मैंने सिर्फ पढ़ाई की है 1 साल. That's why I can safely say that 1 year was more than enough for me to crack this exam. And I still feel कि I could only do my part, which was to study and to give my best. And rest all, the luck factor which many people say, I think that also plays a major role. But that is not in our control. So let's control the controllable. जो आपके हाथ में है वो करो, और जितने अच्छे से कर सकते हो उतने अच्छे से करो. We need to give our best. Right? Don't worry if you have missed it. Again, I think the video will be available on UPSC Guides handle, and I'll also make a written content and post it on my handle, which you can find on the same page. Yeah, that's all. Now I can take up questions and doubts. So, okay, let's begin. Okay, yeah. Please ask. How many % of current affairs will be asked? What about NCERT syllabus? So NCERT syllabus is a matter of preference. अगर आपको basics पढ़ना है तो आप 6th standard से you can start. What NCERTs I referred you can find on my book list. And so yeah, what % of current affairs? 101%. Trust me, even in static subjects like history, current affairs is being asked. In geography, current affairs is being asked. So current affairs you have to master. There's no doubt in that. Yeah. Geography की कौन सी book best है? NCERT 11th and 12th, all the books, and GC Leong. आप BSc कर रहे हो, तैयारी कैसे कर सकते हो? Start reading newspaper and download syllabus. No Ruchi coaching is not compulsory. How can we stay away from distractions? Sort of my biggest distraction was my phone, और मैंने phone बंद कर दिया था. My optional was law. No,
आई हैड गैजेट, आई हैड माई कंप्यूटर, और मुझे अगर फ़ोन करना होता था तो मैं मम्मी का फ़ोन यूज़ करती थी, मेरे पास फ़ोन नहीं होता था. No, all NCRTs are not necessary. Current affairs, I've detailed the entire thing in my book list. Please refer to that. How to choose optional? Honestly speaking, optional should be one जो आपके marks maximize करे. But I did not have time to change my optional. My optional was law, and law is not scoring. But since I graduated in that, that's why I chose law. I did not make notes as such, so it's difficult for me to provide you my notes. See, short notes नहीं, जैसे if I'm reading a book, जैसे मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, so first reading was using pencil, second was using blue pen, third reading using red pen, fourth reading using highlighter, and fifth reading again using some other color of pen. So yeah, no short notes. Yeah, prelims, 2 months dedicated preparation is enough. Saurav, I think if you want to begin, you begin with downloading newspaper and reading, downloading syllabus and reading newspaper daily. Oh, okay. So there are questions on whether you should have backup or not. So I had this doubt. Honestly, I felt कि if I have a fallback option, I will not take my preparations seriously. But I've also spoken to other toppers who felt that having backup gave them a sense of security. So it's actually a personal choice, having backup or not. So I can't say much on that. Sai Harsha, I feel that for working professionals, you can refer to Anudeep Durishetty sir's strategy. It's very good. Gaurav, for world map, do continent wise. You can buy an atlas maybe, and continent to continent you can cover the world map. Vivek, NCRT is not sufficient for prelims. I'm sorry. Any newspaper, it's better if you read the entire thing, and then you can refer to Insights IS Daily Current Affairs for compilation of different sources. I think that's better. For newspaper, you can always subscribe to electronic mode. Electronic mode is available for every leading newspaper. Yeah. Stress is very natural. You can't eliminate it. If you're stressed, it means that you really want to clear this exam. So you can only manage stress. Yeah, and I told you, just try incorporating things which will make your journey happy. Whatever makes you happy, आप अपने routine में वो add करो. International relations, I feel that along with static information, which is available in books and Ministry of External Affairs website, current affairs is the key resource. Answer writing mein na, okay, so this is a good thing. Answer writing, when I wrote my first mains mock, so we only have 3 hours to write, right? It took me 8 hours to finish the paper because I felt ki it was difficult for me to recall the answers. It was difficult for me to put everything on paper in the word limit. So for answer writing, it's not that you don't have knowledge. Knowledge is there. But it's important that you do multiple revisions so that you don't take time in thinking. And you need to practice to consolidate the information in smaller sentences. That is the art of answer writing.
Uh, Neeraj, I did not take any coaching. My timetable is available, Shivani. You can go to my Instagram page and see it there. मोबाइल से कैसे दूर रह सकते हैं? मोबाइल बंद कर दीजिए. Vittu, UPSC book list is available on my Instagram handle. You can go check there. No, 9 to 10 hours didn't really bore me. Like I said, that along with studying, I used to do things that made me happy. So I used to be, और ऐसा नहीं है 9 to 10 hours I did not study continuously. It was in slots. 2 hours, 2.5 hours, 3 hours. I studied in slots. I took breaks. Vlogger DP99. My Instagram ID name is Purvi Nanda Vijay. The handle is irs.purvi.nanda.vijay. Confused to choose language as in for the entire paper or just the regional language? Many people are asking for my Insta ID. Don't worry, I'll ask UPSC guy to post my ID again. Although I'll repeat, my Insta ID is irs.purvi.nanda.vijay. I'll share it at the end of this video. Don't worry. Babita, my timetable is available on my Instagram handle. You can find it there. I'll reshare it. Don't worry. Yeah. Okay, wait. I'll just put my Instagram ID. Hold on, guys. 1 second. Twelfth May, I had science, non-medical. Confusion regarding polity, what do you mean by that? UPSC, yes, it is a tough exam, but वो tough इसलिए है because seats are limited. That's all. This is what makes it tough. So many people are applying and posts are limited. That's why it's one of the toughest exams. My graduation is in law. I've graduated from NLU Punjab. Yeah. I'm sorry, Meghu, I do not have my notes as such. I studied directly from the books. NCERT, don't waste much time on NCERT, honestly. Just read it जैसे हम story books पढ़ते हैं, that's all. 11th, 12th NCERTs, yeah, that you can read properly. उससे पहले का it's just story. Vishnu, I passed in CSE 2020. No, Ananya, it's not mandatory to make notes. See, the purpose is to study and retain कि क्या पढ़ना है, right? मतलब जो आप पढ़ रहे हो वो आपको याद रहना चाहिए. वो आपको ऐसे याद रह रहा है या notes बना के याद रह रहा है, it's all your choice. So note making is not compulsory. But since there are so many questions on notes, no, so let me tell you this कि अगर आप notes बना रहे हो तो ऐसे बनाओ जैसे you are writing answer, right? So for instance, if you are making notes on let's say द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है ना, तो उसके अंदर आप मेक नोट्स की what is Dravida style of architecture, what are the two main styles of temple architecture, Dravida style का origin क्या है, right? And you can make a diagram, the temple architecture of Dravida style. उसके बाद नीचे मतलब उसके advantages या उसके significance in the religion, examples of Dravida style temple, and conclusion में you can write कि Dravida, you know, abhi it's very important to
sustain and preserve these monuments. They reflect an important phase of Indian history. And yeah, something like this. तो जैसे आप आंसर लिखोगे ना वैसे ही नोट्स बनाओ. A book for ancient India, class 11th Fine Arts NCRT, and selective reading of Nitin Singhania. No, we cannot run business while serving. I'm sorry. 2 months is sufficient to crack prelims. आंसर राइटिंग में यू डोंट हैव टू रीड नॉवेल्स. जितना सिंपल आप आंसर लिखोगे उतना सिंपल होगा फॉर एग्जामिनर टू चेक योर कॉपी. एग्जामिनर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, सो यू डोंट हैव टू यूज कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स. बुक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम बाय राजीव आयर. Rashi, I was 24 years old. I am from Udaipur, Rajasthan. Revision is very important. I emphasize on 5 revisions. And in 1 year, 5 revisions is possible. How did I revise all things? So, see, Himanshu, आपने एक बार पढ़ लिया. जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ते हो इट टेक्स यू लेस टाइम, राइट? बिकॉज एक बार पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत तो यू रिटेन. सो विद एवरी रिविजन द टाइम डिक्रीजेस एंड जो वो कॉन्टेंट है इट गेट्स रजिस्टर्ड इन योर हेड. सो या दैट्स हाउ यू रिवाइज. IRS pros and cons. Okay, we can have another session for this, but for the record, I love my service and I plan to stay in this service. My optional was law. Important newspaper, for me I think Indian Express is the best newspaper. It's again a personal opinion. Atharv, I did not take any coaching. Issue 1 year's preparation is more than enough. Lakshmikant is a very comprehensive book. I think politically it's very good. Pratiyogita Darpan or Yojana, honestly I did not read it much. For essay Yojana mein there is this chief editor's note. So for 12 months, the 12 editions, I read the 1 page of every magazine only for essay. My interview language was English. My book list is available on my Instagram handle. Himanshu, I've given interview tips on my Instagram handle. It's available there. इशू दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है. पेरेंट्स को हाउ डू यू वांट टू कन्विंस? आई फील कि टेल योर पेरेंट्स दैट यू आर रियली पैशनेट एंड कन्विंस देम बाय गिविंग देम गुड रीजंस. मतलब you should have good reasons for writing this exam. Only then you will be able to convince your parents, right?
No, Yash. Prelims and mains preparation, I feel it is integrated. There's no watertight compartmentalization. Our mains के syllabus में prelims gets covered. हाँ जी अरुण, 1 साल में तैयारी हो सकती है. Geography standard book GC Leong. It's Lucky Parmar, I'm married. मेरा schedule is available on my Instagram handle. How did I deal with insecurity? Good question. Insecurity कम थी, uncertainty ज़्यादा थी, क्योंकि इस एग्जाम में आपको पता नहीं होता. मतलब इसमें वो नहीं है कि once a topper always a topper, right? So how did I deal with uncertainty? Very simple. मेरे हाथ में तो था नहीं. There's only one thing which was in my hand, which was in my control, and that was my preparation, giving my best. चाहे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, चाहे I'm writing mocks. So yeah. I dealt with uncertainty by controlling the controllable, which was my preparation. And trust me, you can't always be motivated. There will be times when you will feel कि यार नहीं हो रहा है, let's give up and all. And those are the defining moments of your preparation. मतलब जब लग रहा है नहीं हो रहा है, तब भी आप डटे रहते हो. Honestly, this exam is not about selection. This exam is about elimination. सो जो एंड तक डटा रहता है ना, द वन हु स्टेज स्ट्रॉन्ग, स्टेज ऑन देयर फीट टिल द वेरी एंड, दैट पर्सन गेट सेलेक्टेड. ट्रस्ट मी, इट्स अबाउट एलिमिनेशन. पीपल गेट एलिमिनेटेड, पीपल डोंट गेट सेलेक्टेड. तो जो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, दैट पर्सन इज फाइनली सेलेक्टेड. सो या एंड तक यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग. Vaibhav, I read Indian Express. Abhijit, my language was English. Krishika, I did not make notes from newspaper. I am from PCM. I used 11th, 12th mein I had PCM. Manisha, I'll be sharing my Instagram account at the end of this video, don't worry. Vishnu, I'm currently in the Indian Revenue Service Income Tax. I'm Assistant Commissioner of Income Tax. RIA coaching is not compulsory. Self-study is more important. Yes, medical background is very good, in fact, for UPSC. I have 2 friends, both of them are MBBS. Abhishek, 12th is too early to start. Please don't start. UPSC requires a good personality. अगर आप 12th से ही पढ़ाई करने लग जाओगे तो आपकी personality develop नहीं हो पाएगी, right? So at max what you can do is read newspaper daily. उससे ज़्यादा कुछ नहीं, please. ऑप्शनल के लिए देर इज नो बेस्ट सब्जेक्ट. मतलब सी इट कीप्स ऑन चेंजिंग. कभी एंथ्रोपोलॉजी इज मोर स्कोरिंग, कभी मैथमेटिक्स इज मोर स्कोरिंग. सो चूज योर ऑप्शनल अकॉर्डिंगली. आई मीन इफ यू फील दिस इज स्कोरिंग, जस्ट गो फॉर इट.
My optional was law because it was my graduation subject. I knew that law optional is not scoring, but I chose to stay with it. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई बुक नहीं है, ओनली करंट अफेयर्स. यश, माय प्रेफरेंस वाज आईएएस, आईपीएस एंड आईआरएस. सो तीनों ही मेरी सर्विस ऑफ चॉइस थी. आई गॉट आईआरएस एंड आई एम हैप्पी विद इट. Honestly, Vishal, I don't think the medium matters. I know people who are toppers from Hindi medium also. Suraj, history is a good optional. You can refer to Vikram Garewal's preparation strategy for history optional. Yeah. Vishal, I personally feel it's not good to read all the subjects together. My strategy was to finish one subject and then move to other. Current affairs, how I covered, it's available in my book list on my Instagram handle. If you feel CSAT is hard, again I'll say that buy a decent book, study from there and solve previous year question papers. Javed, I cannot share PSIR strategy because that was not my optional. Yeah, BDS background is also possible. There's a dentist in my batch. Rohan, I'll share my Instagram ID at the end of this video, don't worry. No, I used to study with consistency and I used to take breaks. दोनों एक साथ हो सकते हैं. कौन से क्लास से करना बेस्ट है? No, I feel, see, final year of college, I think in that you can start reading. Not before that. Before that, only newspaper. हाँ जी अमृत, सुनाओ आप. No, Vashish, university does not matter. My book list is available on my Instagram handle. What is the best time to start the preparation? Last year, final year of your college, I think, not before that. Abhi, I did not take any coaching. Yes, geography is a good option. No, distance learning does not affect selection. If you feel college syllabus is vast, you can obviously start preparing after graduation. Amrit, for prelims, there is no separate approach. For CSAT only, if you need a separate preparation, you can do. Otherwise, prelims preparation is integrated with mains only. Main syllabus is complete and it actually comprises the entire prelims syllabus. And along with that, you only need to solve at least 5 years previous year question paper and any test series of your choice. I preferred Vision IS test series. No, I do not have a YouTube channel. I do not have an Instagram channel. My optional was law.
For working professionals, I suggest that you refer to Anudeep Durishetty sir's strategy. Chemistry, unfortunately, is not that scoring, Sanjana. Coaching is not at all important. My optional was law. History is a good optional, but you need to have a proper strategy. I suggest you refer to Vikram Garewal's strategy. I think anthropology is a good option for medical students. Yes, English literature is a good option. One year is more than enough to cover the syllabus. To remember and retain what you have studied, you need to do multiple revisions. See, honestly, people, you are asking me about all the optionals. I'm telling you that, there are certain optionals which are more scoring. But I can't tell you if there's any best optional because there's not. Trust me on it. For GS4, for ethics, I actually covered basics from lexicon. There's a book, Lexicon. And for every keyword in the syllabus, I tried to write as many examples as possible. So my ethics content was heavier on the example side. Ethics का आंसर में one thing is आपको clearly you need to clearly explain what you mean by that. Suppose कोई value है probity. Probity definition is steadfast adherence to the highest moral principles all the time, right? Simple definition वो लिखो and then explain it using examples, right? Probity में जैसे T.N. Sheshan, उनका example is very popular. Then Lal Bahadur Shastri's example is very popular. So ऐसे करके explain the concept and then elaborate your answer using examples. अभी आप 12th क्लास में हो, प्लीज़ अभी प्रिपरेशन स्टार्ट मत करो. ओनली स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर. I'll repeat. UPSC tests your personality, how you manage everything, how you manage the syllabus, how you manage time, how you manage yourself, how you manage stress, right? So you need to develop that personality. If you start preparing when you are in school, तो आपकी personality develop कैसे होगी? You need to explore different things. You need to explore different aspects of your life, right? So please only start reading newspaper and in the final year of your college you can start preparation. Yeah. Khushi, for answer writing we can for answer writing we can conduct a different session. No, Vision IS material is not sufficient. For current affairs, newspaper reading is non-negotiable. Graduation score does not matter in UPSC selection. Monthly current affairs, I think Vision IS compilation is comprehensive, but again not sufficient. For prelims, I used to attempt around 80 to 85 questions. I think if you're dedicating 1 hour of your day to newspaper, that is good.
ऑनेस्टली करंट अफेयर्स हैव नो लिमिट. आई मीन आप 1 साल का तो पढ़ना ही है, उससे पहले का पढ़ रहे हो तो और बेटर है. स्टार्टिंग से कैसे करें? स्टार्ट डाउनलोडिंग सिलेबस एंड मेक अ बुक लिस्ट. I think new NCRTs are good enough. How to overcome fear and self-doubt? Good question. Keep going, keep working hard, stay consistent. I have shared my book list on my Instagram handle. I'll be giving my Instagram handle at the end of this video. See, good handwriting is always a brownie scorer. लेकिन मतलब you just need to have legible handwriting. मतलब examiner should understand what you have written. That's all. For answer writing, we can conduct a different session. Don't worry. Mock interviews, 5. No, for current affairs, no YouTube channel is sufficient. I'm sorry. Yes, mock test series is very important. Without practice, if you go directly in the main exam, it will be very difficult. My optional was law. I don't have Telegram ID. I don't feel there's a best coaching available, and I personally am not a person who would recommend coaching. Newspaper is non-negotiable. Indian Express is the one I recommend. You can always go for Hindu also. I graduated from NLU Punjab. Hindu is a good paper. So what happened was, in my city, same day Hindu was not being delivered. So एक तो वो चीज़ थी, and secondly, I found Indian Express better than Hindu. So that's how I stuck with Indian Express, and it worked for me. All right. Okay guys, so I'll end this session here. The video of this session will be available on the Instagram handle of UPSC Guide. And I know you have a lot of questions. So you can always message me on my Instagram handle. Yeah, my Instagram handle will be available in the link to this, the recording of this video, don't worry. So it was really nice interacting with you. And again, for the sake of repetition, I would emphasize that the C in civil services examination stands for 3 things: common sense, current affairs, and consistency. So please focus on that. Yeah. Okay. Thank you.